वेलकम टू टेस्ट द बेस्ट सीरीज फ्रॉम 91 व्हील्स। फॉर दिस वीडियो हम कंपेयर करेंगे इंडिया की 3 प्रीमियम हैचबैक्स फॉर द बेस्ट एसी परफॉर्मेंस। फॉर दिस ईच कार विल हैव 4 सेंसर्स। फर्स्ट इनसाइड द फ्रंट एसी वेंट्स, सेकंड रहेगा को ड्राइवर हेडरेस्ट के पास, तीसरा इनसाइड द रियर एसी वेंट एंड फाइनली फोर्थ एट द रियर हेडरेस्ट। डू नोट, हमने फ्रंट एंड रियर एसी वेंट्स को पोजीशन किया टू थ्रो द एयर टुवर्ड्स द सेंसर्स एट द हेडरेस्ट। So 12:30 p.m. right now. It's already super hot. I'm sweating. As you can see, the cars are parked. The doors are open. We'll close the doors right now at 12:30 and we'll let the cars bake for 30 minutes. So 12:31, all the doors are closed for 30 minutes. We'll let the cars bake under the sun. So inside the Altroz, this one inside the AC vent is 50 plus. It's sort of melting LCD. That is 61.7 on this. The rear AC vent, again it's melting badly, 43.7. That sensor is 60.7. So 60.7, 61.2. The car is super hot. We will start the car now. The Altroz, this is the DCA automatic. And lowest possible temperature and the highest possible speed, which is also over here. Highest possible fan, lowest possible temperature, and we'll get out of the car now. Let the car be on idle for 5 minutes. My other colleagues are doing the same in the i20 and in the Baleno. अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ पे हमारे चारों सेंसर्स लगे हुए हैं। पहला जो सेंसर है उसकी रीडिंग यहाँ पे आ रही है 52.9 डिग्री सेल्सियस, जो कि एसी वेंट में लगा हुआ है। दूसरा सेंसर जो हमने यहाँ पे फ्रंट हेडरेस्ट पे लगाया है उसकी रीडिंग आ रही है 61.8 डिग्री सेल्सियस, और ये थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है 7, मतलब आप ले सकते हैं 61.78 सेल्सियस। अब अगर हम चलते हैं पीछे, तो पीछे जो रीडिंग आ रही है ये है हमारा पीछे का पहला सेंसर, जिसमें जो लगा हुआ है रियर एसी वेंट में, और इसकी रीडिंग आ रही है 49.8 डिग्री सेल्सियस। और ये है हमारा फोर्थ सेंसर जो लगा है रियर हेडरेस्ट में, जिसकी रीडिंग है 61.5 डिग्री सेल्सियस। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और एसी को करते हैं फुल ब्लास्ट पे। और फिर आके इसकी रीडिंग्स चेक करेंगे। After baking the car for nearly half an hour, the front AC sensor reading is 55.1 and the front seat sensor is showing 59.6.7, fluctuating. And now coming to the rear AC vent sensor, it's showing 45.7, 45.8, fluctuating. And the rear headrest sensor, it's showing 58.6. So this is after baking the car half an hour. Now what we'll do is just start the car and AC को करेंगे full blast पे, minimum temperature setting पे, and we'll leave the car for 5 minutes. Altroz front AC 55.3, front headrest 61.7, rear is 43.6, headrest is 60.7. बलिनो का फ्रंट एसी वेंट का टेम्परेचर गाड़ी शो कर रही है 55.1 डिग्रीज, एंड फ्रंट हेडरेस्ट पे जो सेंसर लगाया है दैट इज शोइंग 59.7 डिग्रीज। द रियर एसी वेंट सेंसर इज शोइंग 45.7, 45.8 फ्लक्चुएटिंग। जो लास्ट हेडरेस्ट का, जो रियर हेडरेस्ट का सेंसर है दैट इज शोइंग 58.6 डिग्रीज। तो i20 का जो फ्रंट एसी सेंसर है वो रीडिंग शो कर रहा है 52.9 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्रंट हेडरेस्ट पे हमने सेंसर लगाया हुआ है वो रीडिंग शो कर रहा है 61.6 डिग्री सेल्सियस।
अगर बात करें पीछे की, तो पीछे वाले एसी वेंट का जो सेंसर है वो शो कर रहा है 49.8 डिग्री सेल्सियस एंड रियर हेडरेस्ट का सेंसर शो कर रहा है 61.5 डिग्री सेल्सियस। Now the Balenos के जो windows हैं, they are proper UV cut and उससे कितना फर्क पड़ता है that the maximum temperature in the Baleno has been 59.7 जो आगे वाला headrest था, as compared to 61.6 on the i20 and 61.7 on the Altroz। तो ऑलमोस्ट 2 डिग्री का फर्क है when the cars under the sun। अगर प्रॉपर आपके पास विंडोज हैं UV कट वाली तो अंदर टेम्परेचर डेफिनेटली कम होता है। So after 5 minutes, just getting the speed down to 50%, which will also be done in the other two cars, and this is 21.3 on the front AC vent, 21.1, 35.9 on the headrest. The rear AC vent is 23.3 and the rear headrest 38.8. So now after idling the car for 5 minutes, the AC was on full blast on lowest temperature. The readings are now, जो front AC vent के सेंसर की रीडिंग है वो है यहाँ पे 24.2 डिग्री सेल्सियस, जो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही है। उसके बाद अगर हम आते हैं फ्रंट हेडरेस्ट की रीडिंग पे, तो वो यहाँ पे शो कर रही है 33.8 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही अगर हम देखें रियर वेंट के टेम्परेचर को, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है 24.5 डिग्री सेल्सियस। और उसके साथ ही साथ जो रियर हेडरेस्ट वाला टेम्परेचर सेंसर है वो हमें रीडिंग शो कर रहा है 45.4 और 5 डिग्री सेल्सियस की। ये रिजल्ट्स थे 5 मिनट गाड़ी को आइडल कंडीशन पे एसी फुल ब्लास्ट और लोएस्ट टेम्परेचर पे छोड़ने के बाद। So it has been 5 minutes since we have left the Baleno on idle, and the fan speed was full, which we have just lowered to half. And as you can make out, AC ka temperature is already set to lowest degree. Front AC sensor is currently showing us 25 degrees and still dropping. At the front seat, the front headrest sensor is currently showing us 38.6.7 coming down. Baleno rear AC vent reading 26.8. And this is also coming down, but the speed is a little bit slow. The rear sensor at the rear headrest of Baleno is currently reading 42.1 degrees and it's still dropping. So at the 10-minute mark, here is a surprise, 14.1 for the Altroz. We are still at the idle RPM. All the cars are at idle RPM. Fan speed is half, temperature is lowest, 14.1. The headrest is 30.3, the headrest over here. The rear AC vent is 17 degrees, pretty good, and the rear headrest is 36.3. जो AC की रीडिंग्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। जो फ्रंट सेंसर है वो शो कर रहा है 20.1 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग्स। उसके साथ ही साथ जो फ्रंट हेडरेस्ट है वो शो कर रहा है 31 डिग्री सेल्सियस। बात करें रियर की, जो रियर वेंट का सेंसर है वो शो कर रहा है 20.8 डिग्री सेल्सियस। और जो रियर हेडरेस्ट का सेंसर है वो शो कर रहा है 42.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। गाड़ी आइडल पे है लास्ट 10 मिनट से, एसी ऑन है और ये थी इसकी रीडिंग। The front AC sensor is currently at 25.7, still reducing but the speed is slow. Front headrest sensor is currently showing to us 38.8, and at the rear AC vent the sensor is still dropping. The temperature is going towards 27. Currently it's showing 27.6, and the rear headrest sensor is currently reading 42.1 degrees. Okay, so we'll start revving the car. All the cars will be revved together at approximately 1500 RPM. This is to showcase that if you're driving and the revs are rising, kitna farak padta hai. We'll start revving, and after 60 seconds we'll take the reading of all the sensors, and the aim is to find the lowest possible reading on this particular sensor of the AC vent.
देखते हैं कि कितना ड्रॉप होता है। आई थिंक इमीडिएटली फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। 1500 RPM के आसपास मैंने गाड़ी को होल्ड किया है। इग्नोर द फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले, द कार्स हैव बीन बर्निंग अंडर द सन। अभी तक बाकी कार्स के मुकाबले आई थिंक वो i20 है, पीछे अल्ट्रॉस है। दिस हैज़ बीन परफॉर्मिंग प्रीटी वेल मेरे ख्याल से। सॉरी, i20 इन बलेनो है। अल्ट्रॉस इज़ परफॉर्मिंग प्रीटी वेल, आई थिंक सो, बट फिंगर्स विल बी क्रॉस्ड। देखते हैं ये 10 से कम जाता नहीं जाता। इस टाइम पे जो मेरा हेड रेस्ट है दैट इज़ 27.9 एंड वी हैव बीन कम्युनिकेटिंग थ्रू वॉकीज ऑल ऑफ अस। द सपोर्ट टीम इज़ बर्निंग अंडर द सन, हैट्स ऑफ टू देम। And at the back 33.8 is for the headrest, and for the rear AC vent 14.5. Okay, for the Altroz front AC vent is right now at 9.5 degrees, 9.6 degrees. Front AC vent 9.5 लेके चलो। The front headrest 25.2, the front headrest 25.2, the rear 31.7, 31.3 is the rear headrest, 31.3 rear headrest, and give me 1 second for the rear AC vent. 13.3 is the rear AC vent of the Altroz at right now. Now we are revving the engines to find out कि rev करने से क्या फ़र्क पड़ता है गाड़ी के AC के परफॉर्मेंस पे। इसके साथ ही साथ अगर हम रीडिंग्स की बात करें यहाँ पे, तो जो इसके रीडिंग्स हैं वो रेव्स के हिसाब से थोड़े शायद फ्लक्चुएट करें। तो रेव्स करने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे इसके लोएस्ट पॉइंट तक जाने की। आफ्टर 1 मिनट ऑफ रेविंग जो यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है, फ्रंट एसी वेंट 16.4 डिग्री सेल्सियस, फ्रंट हेडरेस्ट 28.7 डिग्री सेल्सियस, रियर एसी वेंट इज शोइंग 17.7 डिग्री सेल्सियस and rear headrest is showing 39.5 degrees Celsius. बलिनो में after 1 minute of idling front AC vent पे it's 15.6, 15.5 still dropping. Not bad, not bad. So 15 वो है 10.7. हेडरेस्ट पे 33.3, rear AC पे 21 and rear headrest पे 40.6. So अभी all the 3 cars will be positioned recording of the front AC vent only. Revs approximately 1500. Let's find the lowest dip that the compressor can give in the cars. 8.5. Will the Altroz win the battle? Let's see. Let me quickly just show you कि rear AC vent पे इस टाइम पे क्या हो रहा है। 11.7, 11.6, superb. 8.3. The wire is inside. 8.2. Okay, so 8.1, 8.1, 8.1, 7.8, 7.8. गाड़ी कंटिन्यूसली रेव पे है अराउंड 1500-1600 RPM पे, और जो AC की रीडिंग्स हैं वो नीचे जा रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले 13.8 था, अब 13.2 हो चुका है फ्रंट AC वेंट पे। इसके साथ ही साथ जो बाकी सेंसर्स हैं उनकी भी रीडिंग नीचे जा रही है। जैसे अगर मैं आपको फ्रंट हेडरेस्ट की रीडिंग दिखाऊं तो वो हो गई है अब 26.1 डिग्री सेल्सियस, और उसके साथ ही साथ अगर रियर AC वेंट की रीडिंग दिखाऊं वो यहाँ पे हो गई है 14.9 डिग्री सेल्सियस, और रियर हेडरेस्ट की रीडिंग है यहाँ पे 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे रेव्स बढ़ रहे हैं इंजन में, वैसे वैसे AC की रीडिंग ड्रॉप हो रही है। जैसे यहाँ पे ये अब 13.1 डिग्री सेल्सियस आ गया है। गाड़ी कंटिन्यूसली रेव हो रही है 1500 से 1700 RPM के बीच में। Continuously revving the car above 1500 RPM, and you'll just try to see how much the front AC vent sensors will drop down, how coldest temperature will they be able to record. Currently the Baleno is holding 11.9 degrees, roughly 12 degrees, and still dropping. So the current temperature reading at the front AC vent sensor of Baleno is 10.2. We are still revving the car above 1500 RPM, and we will try to hold it for another 1 minute, and we'll just try to see how much this will dip down.
फाइनली बिफोर एंडिंग द वीडियो हम गाड़ी को दोबारा रेफ करेंगे टू शो कि रियर एसी वेंट पे कितना आता है। फ्रंट तो गया था 7.8 डिग्री तक। अब इट्स टाइम टू सी द रियर एसी वेंट टेम्परेचर इफ यू आर रेविंग द कार और यूजिंग द कार इन ट्रैफिक। Altroz seems to be the winner again. Rear lowest 10.5 degrees, 10.5. As you can see, गाड़ी अभी भी कंटिन्यूसली रेव हो रही है 1700 RPM पे। रीडिंग्स ड्रॉप हो रही हैं। अब दिखाते हैं आपको रियर एसी वेंट का ड्रॉप कितना आया है। तो जो रियर एसी वेंट है वो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है 13.9 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे ये दिखा रहा है 13.9 डिग्री सेल्सियस का रीडिंग। और यहाँ हम फाइंड करेंगे कि ये लोएस्ट पॉसिबल कितना जाता है। अगर हम बात करें रियर हेडरेस्ट की रीडिंग की तो वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी 37.1 डिग्री सेल्सियस। अभी we will just try to keep the RPM just above 1500 and we will try to see कि rear AC vent पे temperature dip कितना आता है। Currently the reading stands at 13.9 degree Celsius, but let's see how much it drops. So it has been a very interesting test under the hot summer sun. I'll come inside the shade now. Fluctuations काफ़ी हुई थी, but one car that from the starting turned out to be a very promising winner has to be the Altroz. Even the rear AC vents went to under 11 degree, the front went to under 8 degree. So I think overall good match. Premium hatchbacks का good match, but अगर एक choose करना है winner, it has to be the Altroz.